गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay. So, in the last class, we discussed about the UPS, uninterrupted power supply. So, what is UPS? What are the different types of the UPS that we have already seen in the last class? Okay. And after that, we discuss about the different components, sub-components of the UPS. And the main component, one of the main component was the battery. So we discussed in detail about the battery system. Okay. So what is primary battery, secondary battery, okay, and the different terms related with the battery. That is the depth of discharge, the state of charge. Okay. So these things we have already discussed in so much detail in the previous class. So today I'm going to explain about the selection and the sizing of the UPS batteries. Okay. So how we are going to select that this should be the specification of the battery, or this should be the size of the battery. Okay. One numerical I have already explained in the previous class regarding this one. Okay. So little bit of things in your mind that how we will calculate the ampere hour rating and the number of batteries of a specific specification to meet the to fulfill the particular demand. Okay. So these things we have already seen. So today I am going to discuss some few techniques, or you can say some few points which are very much affected the selection of the battery and the size of the battery. Okay. So some factors you can say that will decide that which type of battery we should select for our use. Okay. So let us see some points. The first one is the operating consideration. Okay. What is this operating consideration? What is the meaning of this word? If we are saying that operating consideration, that will affect little bit while we were selecting the batteries. Okay, what is the meaning of this operating consideration? It means that there are two different types of battery which are available. Okay, the first one is the long duration low discharge rate battery, and the second one is high rate short duration battery. Okay, what is the meaning of this long duration low discharge rate battery? इसका मतलब क्या हुआ कहने का? Long duration low discharge rate. That means the discharge rate is less. Okay, if we are connecting any load to a particular battery, then the battery will start discharging. Okay, it is supplying power to the load, and continuously accordingly the battery is getting discharged, but this discharge rate is slow. Okay, so you can provide power to the load for a longer duration. Okay, this is one method. ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा? दूसरा मेथड हो सकता है कि हम लोग हाई डिस्चार्ज रेट के साथ लोड को प्रोवाइड करें पावर, लेकिन जो पावर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा. ये एक दूसरा तरीका हो सकता है. Either we can supply with a low discharge rate and that will work for longer duration, or we can do vice versa. Okay, for example, बैटरी बैंक यूज करते हो तुम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है?
तो बैटरी बैंक में नॉर्मली क्या देखते हो, एक दो पॉइंट रहते हैं यूएसबी इनपुट्स के लिए, एक 1 एम्पियर रेटिंग लिखा हुआ रहता है, एक 2 एम्पियर रेटिंग, या किसी में 5 एम्पियर रेटिंग, ठीक है, रहता है ना। तो अगर 1 Yes, sir. एम्पियर रेटिंग सपोज कनेक्ट करते हैं मोबाइल को, तो वो धीरे धीरे चार्ज होता है नॉर्मल मोड में। अगर 2 एम्पियर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फास्ट चार्जिंग होता है। तो बैटरी बैंक जो हमारा चार्ज है, अगर वो फुल्ली चार्ज है और मोबाइल को चार्ज कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग 2 एम्पियर वाले पोर्ट के साथ कनेक्ट करके, तो मोबाइल हमारे जल्दी चार्ज हो जाएगा। लेकिन बैटरी का डिस्चार्ज रेट वो हमारा ज्यादा है, इस कारण से हमारा मोबाइल फास्ट चार्ज हो रहा है। लेकिन वो बैटरी बैंक कितने देर तक पावर सप्लाई कर पाएगा, वो जो ड्यूरेशन होगा दैट विल डिक्रीज, एंड द case will be opposite when you will connect your mobile through 1 ampere port. That is what I'm telling. This long duration low discharge rate and high rate short duration battery. These are the two different methods. Okay, these are two different operating conditions, you can say, to charge the battery. So we have to decide which one will be suitable for us as per our requirement. Okay, so that is the meaning of this point, operating consideration. Okay. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, डिजाइन एंड एजिंग मार्जिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिजाइन एंड एजिंग मार्जिन? स्क्रीन क्लियर है ना, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So what is the meaning of this design and aging margin? Aging means what? The life of the battery. Okay. So कोई भी बैटरी हम यूज कर रहे हैं तो उसका एक सर्टेन लाइफ होगा। लास्ट क्लास में याद होगा बताए होंगे, एक डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज एक टर्म था। Okay. What is this depth of discharge? Any one of you? अगर हमारा एक बैटरी है, उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर 80% है सपोज, इट मीन्स व्हाट डज इट मीन? It means that if the battery is fully charged, then if we will connect that battery to a particular load, then it will discharge up to 80% of its full rated capacity. Okay. So डिजाइन एंड एजिंग मार्जिन कहने का क्या मतलब है हमारा, कि हम लोग जो बैटरी सेलेक्ट करते हैं कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द बैटरी। ओके, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट है सपोज 1 किलोवाट लोड है, ठीक है, घर में हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं लोड, अगर वो 1 किलोवाट है, तो बैटरी हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, उसका साइज क्या होना चाहिए जो कि इस 1 किलोवाट लोड को फुलफिल कर सके। रेटिंग उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए या उससे थोड़ा स्लाइटली हायर साइड होना चाहिए। हायर साइड क्यों होना चाहिए स्लाइटली? क्योंकि वो 100% डिस्चार्ज नहीं होगा बैटरी। कोई भी फुल्ली चार्ज बैटरी अगर है तो वो उसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगा 80%, 85%, व्हाटएवर, वो बैटरी अगर 100% चार्ज की है तो वो 80-85% तक ही वो डिस्चार्ज होगा और उतना ही देर तक वो पावर प्रोवाइड कर पाएगा लोड को। ठीक है, इसलिए हम लोगों को एक थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन कंसिडर करना पड़ता है। अगर 1 किलोवाट लोड के लिए हम लोग बैटरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एज पर कैलकुलेशन जो हमारा आएगा बैटरी का साइज, वो 20-25% हायर कैपेसिटी का बैटरी हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन सप्लाई कंप्लीट पावर टू द लोड 1 किलोवाट। That is the meaning of this word design and the aging margin. Clear है? Yes, sir. Okay.
Third point is voltage window design. What is the meaning of this word? Then voltage window design. Voltage window. That means there is a window of the voltage rating. It means there is certain range for the voltage. Okay. There is certain range for the voltage, and within this range, we are able to supply the power from the battery. Okay. So there is a range. That means there is some minimum voltage and the maximum voltage. Okay. And between this minimum and the maximum voltage, we are supplying power to the load. Okay. That is voltage window design. So we need to choose a battery having a certain window range. Okay. So that if there will be any voltage variation, so that will fit. Okay. The performance of the battery, that will not affected. Okay. It will be allowable to operate within a certain voltage window. Okay. The battery is able to supply within a certain voltage window. Okay. So that is the meaning. So the maximum allowable voltage is what? The maximum voltage of the UPS and the other connected load. That is the maximum voltage that may be applied to the battery. बैटरी पे हम लोग कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं? वो हमारा होगा मैक्सिमम लिमिट। क्योंकि बैटरी को जब भी कनेक्ट करेंगे लोड के साथ तो वो डिस्चार्ज होगा, तो जो उसका डिस्चार्ज होने का रेट है अकॉर्डिंगली हम लोगों को देखना पड़ेगा बैटरी जो चार्जर है, दैट इज AC to DC कन्वर्टर, that will equally charge, or the charging rate of the battery will be equal to or slightly higher than the discharge rate. ठीक है, बैटरी जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है या तो उसी रेट से हम लोग बैटरी को चार्ज करें या उस चार्जिंग रेट उससे ज्यादा हो डिस्चार्ज रेट से, तब क्या होगा हमारा कि हम लोग बैटरी के थ्रू लोड को पावर सप्लाई करते रहेंगे कॉन्टिन्यूअसली। अदरवाइज चार्जिंग रेट कम होगा, डिस्चार्ज रेट ज्यादा होगा तो battery will never be fully charged and we are not able to supply power to the load after a certain period of time. Okay, so maximum voltage, allowable voltage is the maximum allowable voltage of the UPS and the other connected load is the maximum voltage that may be applied to the battery. Okay, and that voltage is used for high rate charging. Okay. And the minimum voltage, so minimum voltage determines the final voltage to which the battery may be discharged. बैटरी जैसे डिस्चार्ज हमारा होते जा रहा है धीरे धीरे, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी उसका एक धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। देखो ना, बैटरी अगर काफी लो लेवल तक हो गया बैटरी का लेवल, ठीक है, काफी डिस्चार्ज हो गया है, बिल्कुल थोड़ा ही सा चार्जिंग बैटरी में बचा हुआ है, उस वक्त अगर लोड को कनेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाएगा लोड को, जो कि बैटरी जब फुल्ली चार्ज रहता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज भी वो एक सर्टेन वोल्टेज लेवल तक ही होगा। ठीक है, उसके बाद वो बैटरी पावर सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो एक वोल्टेज रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम, between this range the battery is able to supply the power, the performance will not deteriorate. Okay. That is the meaning of this voltage window design. The next point that we should be taken into consideration while selecting the size of the battery, that UPS charging limitation. Okay. UPS charging limitation means what? So for charging of the battery, as I told, that we need to convert AC power, input power, into the DC. Okay. And that DC will be given as an input to the battery for
charging the battery. Okay, so when calculating the battery size, then we should consider the battery charging capability of the rectifier. बैटरी चार्ज करने का क्या कैपेबिलिटी है, what is the capability of the rectifier that we are using to charge the battery, that should be taken into the consideration. Okay, so ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जब अगर हम लोग बैटरी का साइज अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये सेलेक्ट करेंगे किस तरह के बैटरी को हम लोगों को यूज करना है फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. हमारा रिक्वायरमेंट वेरी करेगा, तो अकॉर्डिंगली किस पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो हम लोग उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्विक चार्जिंग करना है तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए बैटरी रन करे लेकिन क्विक चार्जिंग फैसिलिटी उसमें होना चाहिए. ठीक है, उस तरह के बैटरी को हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा. क्विक चार्जिंग के साथ साथ हम लोगों को तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि रेक्टिफायर जो है वो भी अकॉर्डिंगली उसी कैपेसिटी का होना चाहिए. ठीक है, जो कि बैटरी को कॉन्टिन्यूसली हाई रेट पर इनपुट पावर प्रोवाइड करते रहे. तो फैक्टर्स जो है ये डिसाइड हम लोग करते हैं एज पर आवर यूजर्स, एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके, some other factors has been listed here. Okay, for a particular type of the battery, for example the lead acid battery, if we are considering a general, very general purpose battery, lead acid battery that we are using. Okay, if we are taking this example, then we need to consider some points while we are selecting lead acid battery. That's the initial capacity. किसी भी बैटरी को इनिशियली, कोई भी बैटरी को मार्केट से खरीद करके लाओ और उसको इनिशियली अगर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, यूज में अगर लाते हैं, तो जो बैटरी की कैपेसिटी है इनिशियली वो फुल कैपेसिटी पर हम लोगों को पावर प्रोवाइड नहीं करेगा इनिशियली. इट विल टेक सर्टेन टाइम टू गेट फुल्ली चार्ज. ओके, सो द इनिशियल कैपेसिटी इज not 100%, it is slightly lower than the 100%, either 95%, 90%, 88%, whatever. Okay, so the initial capacity, that is also a factor. Specific gravity, lead acid बैटरी में एक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक फैक्टर है जो कि बैटरी के साइज को अफेक्ट करता है. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं लेड एसिड बैटरी में, जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है. आइदर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो और हाई. ओके, सो दैट विल डिसाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरी. इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लो, if the specific gravity is low, then the performance is also low. Okay, but the battery is able to supply the power for longer duration of time. Okay, अगर specific gravity कम है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं लेड एसिड बैटरी में, तब फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस जो बैटरी का है, जो पावर क्वालिटी होगा, that is low, but it will supply for longer duration of time. ठीक है, जैसा कि इससे पहले वाले पॉइंट में ही बताए थे, डिजाइन एंड एजिंग मार्जिन, सॉरी फर्स्ट पॉइंट ऑपरेटिंग कंडीशन में. ठीक है, so the specific gravity will also decide the performance of the battery. ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बेटर होगा हमारा, तब अगर हाई होगा तब क्या होगा, the performance will increase, but the duration of
supplying power from the battery, that will reduce comparatively when the specific gravity is low. So this will also a factor, this will also a big factor while we are selecting the battery. Next one is temperature. टेम्परेचर भी एक फैक्टर है बैटरी का साइज और उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, जो कि क्या नॉर्मली एक ये चीज देखा गया है कि 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो भी होता है अराउंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे अगर कम टेम्परेचर होता है तो बैटरी का परफॉर्मेंस हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बैटरी का 25 डिग्री टेम्परेचर पर परफॉर्मेंस जो है वो एक सर्टेन परफॉर्मेंस है, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा घट करके 15 डिग्री 16 डिग्री के आसपास अगर आ गया तो उस वक्त जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो कम हो जाता है, अराउंड 10% वो डिक्रीज हो जाता है। क्या तो ये जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हुआ बैटरी का, वो एक फैक्टर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अगर बैटरी का किसी स्पेसिफिकेशन को देखोगे, ठीक है, तो वहां पर एक फैक्टर दिया रहता है डी रेटिंग फैक्टर। ठीक है, वो डी रेटिंग फैक्टर ये चीज बताता है कि विद द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर व्हाट विल बी द अफेक्ट, okay, performance, how the performance of the battery will change by changing the derating factor. Okay, जैसा कि यहाँ अगर देख रहे होगे इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि if the battery can supply 100 kilowatt for 15 minutes, if a battery can supply 100 kilowatt for 15 minutes at 25 degrees centigrade, okay, and the derating factor is 1.11, okay, then the same battery will be capable of delivering 90 kilowatt for 15 minutes at 15.6 degree centigrade. अगर टेम्परेचर अगर हमारा 25 टू 15 डिग्री हो गया 15.6 डिग्री, तो डीरेटिंग फैक्टर अगर 1.11 है या 1.10, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोवाट रिड्यूस हो जा रहा है। अब 100 किलोवाट के बदले सिर्फ 90 किलोवाट लोड को ही वो पावर सप्लाई कर पाएगा फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन। Okay, so you can see that when the temperature is decreasing, the performance of the battery that is also decreasing. Okay, so that will be decided by derating factor, which is given in the specification sheet of the battery. Okay. And the last one is the warranty consideration. Obviously, you know that the warranty period that will also affect while we are going to purchase the battery. Okay, so the selection of the battery that will be affected by the warranty period. Okay, 24 months warranty, 36 months, 48 months. Accordingly, the price will vary and the performance will also vary. अगर हमारा 24 months warranty है, तो after 2 years the performance will be not as equal when we are using at the initial stage. Okay, 36 month warranty है, so performance after 24 months will be better than the battery which has 24 months warranty. Okay. So the performance is also varying according to the warranty period provided by the different manufacturers. Okay. And also the cost is also varying. Okay. So these are the certain factors or certain parameters you can say to decide which type of battery we should use and what should be the size of the battery. Okay. So that is about the UPS and battery. Yeah, one more thing is there. Okay. How we will calculate the size of the battery. Okay. एक न्यूमेरिकली लास्ट क्लास में बताए थे, तो वो एक जनरल हमारा रूल था कैसे हम लोग बैटरी का साइज डिसाइड कर सकते हैं, और एक हमारा ये
और मेथड है, ठीक है। बेसिकली दो मेथड्स है, वाट पर सेल मेथड एंड एम्पियर पर सेल मेथड, ठीक है। ये दो मेथड है जिससे कि हम लोग बैटरी के साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बैटरी का साइज कहने का क्या मतलब है, जो उसका एम्पियर आवर रेटिंग हो, ठीक है। So we can select the size of the battery by using two different methods. The first one is watt per cell method. वाट पर सेल मेथड में हमारा क्या होता है, नॉर्मली कि हम लोग ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको कि हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं कि द रिक्वायर्ड वाट पर सेल, okay, what should be the ampere rating of the battery. Okay. Something is missing here. Here it should be a volt ampere of the load. Okay, this VA. So ampere of the cell, that is equal to volt ampere rating of the load into power factor, it's divided by the efficiency of the UPS into number of cell. Okay. So if certain values are given, okay, the power factor, the volt ampere of the load, efficiency, and the number of cells, then we can find out the ampere rating which is required for the battery. Okay. And what is this A1? A1 is any additional load which is connected to the battery. Okay. So if there are 4 different loads are connected, then we can add this value for all 4 different loads. Okay. So this volt ampere of the load, so this volt ampere of load 1 into power factor divided by efficiency into number of cell, plus again the volt ampere of the load, second load, into power factor divided by efficiency into number of cell. Like this we can add for each and every load. Okay, and the sum will give the total ampere rating which is required for the battery. Okay. The second one is ampere per cell method. If you see that the formula is very much similar. Okay, the only difference is here also it is a volt ampere. Okay, so the only difference is this one. In the watt per cell method, it was given the number of cell, but in the ampere per cell method, here it is given VDC, average discharge voltage. Okay, so we can use this formula, and similarly we can also add the value for different types of the load. If there will be 4 or 5 loads, then we can add the value for all 4 or 5 loads using this formula. Okay, so the total sum will give the ampere rating of the battery. So it's a simple mathematics. Okay, so each and every parameters will be given, then we can easily find out the ampere rating. Okay. So this is the reference that I have used for these lecture notes. Okay, so these are the details about the UPS batteries, their selection, size, and all things. Okay. One more thing that was left in this module. Okay. If you remember that initially in this module, I explained about the DG. Okay. Actually,